Right. My name is Rajiv K Bajaj and you're watching me, of course, on Inside Story on Lemon News. That's right. The name of the channel, as you know, is Lemon News and the name of the program is Inside Story. We'll take the headlines first, but after that, as we promised yesterday, कल हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम बात करेंगे NSEL स्कैम के बारे में. सबसे बड़ा स्कैम, चलिए सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा स्कैम मेरे मुताबिक महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंकिंग स्कैम है. वो सबसे बड़ा है पिछले 20 साल में, जिसमें 2.5 लाख या 3 लाख करोड़ लोगों ने उड़ा लिए और असल में पैसे गए. और NSEL भी वैसा ही स्कैम है. जी हाँ, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सराफ साहब होंगे, चेयरमैन of the NSEL Investors Forum. He'll be right here with us. And we'll also talk about infrastructure and what Devendra Fadnavis ought to be doing. And we'll have Professor Iyer right here in the studio. Also with us, Advocate Pradeep Nambiar. But all that after the headlines. And in case you want to say something, you want to tell us something, you have some opinion to express, please do send in your emails on Inside Story at lemonnews.com. That's Inside Story at lemonnews.com. Let's take a look at the headlines and then let's get right into it. Why is Jignesh Shah out? Jignesh Shah बेल पर है. जी हाँ, जमानत मिल चुकी है और हिंदुस्तान में एक बार जमानत मिल जाती है, उसके बाद ना जाने कितने बरस लग जाते हैं आदमी को वापस जेल भेजने के लिए. मुझे नहीं लगता कि जिग्नेश शाह अब जेल जाएंगे. Let's look at the headlines first. प्रधानमंत्री की आदर्श ग्राम योजना पर कांग्रेस की मुहार. कुछ गांव राहुल ने तो कुछ को सोनिया ने लिया गोद. मोदी को नीतीश की चुनौती. कहा 56 इंच का सीना है तो बिहार को विशेष दर्जा देने का वादा पूरा करें. एनसीपी भाजपा में नजदीकी बढ़ने के आसार. शरद पवार ने परिवार समेत सड़कों पर लगाई झाड़ू. और ऑस्ट्रेलिया से पीएम मोदी ने की पवार की तारीफ. मराठा और मुस्लिम आरक्षण पर बॉम्बे हाईकोर्ट की बात. सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी फडणवीस सरकार. और बीमार रेलवे को सुधारने के लिए प्रभु ने लिया मेट्रो मैन का सहारा. श्रीधरन की मदद से मिटाएंगे भ्रष्टाचार, लाएंगे पारदर्शिता. Right, and as I promised you, we're going to be talking about the NSEL scam. And right now with us, Mr. Saraf, thank you very much for coming over here. So nice of you. Pradeep Nambiar, we welcome you to the show. Of course, you're there every day with us. And Professor Iyer, great to have you back. Great to have you back. First, Saraf साहब, आप बताएं, जहाँ तक NSEL scam का प्रश्न है, NSEL scam, for a long time, it was right there on the front page of practically every pink paper. It seems to have disappeared. Has the scam disappeared? Have you all got your money back? What's happening, sir? सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा जी, ये पिंक पेपर्स में से डिसअपियर नहीं हुआ है. आप प्लीज़ बिजनेस स्टैंडर्ड देखिए जी. पिछले हफ्ते में 2 बार ये पूरे न्यूज़ में छपा है. मेरा खुद का रिजॉइंडर छपा है जो वेंकटाचारी ने कहा था, उनके चेयरमैन ने, FTIL के चेयरमैन ने जी. इसके अलावा ET न्यूज़ में आया है. इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया है मर्जर ऑफ NSEL और FTIL का, उसके बारे में पेपर में छपते आया है. इसके लिए मेरा कहना है कि ये पेपर से उड़ गया है, पिंक पेपर से, ये समझना गलत होगा. और ये यानी गुलाबी पेपर्स में आपके मुताबिक अभी तक है. बिल्कुल है, लेकिन सर, क्या लेकिन क्या गुलाबी पेपर्स में होना काफी है, ये बताएं. आज की तारीख में NSEL के जो चेयरमैन हैं जिग्नेश शाह साहब इत्मीनान से घूम रहे हैं, अपने अलग अलग बिजनेसेस में लगे हुए हैं, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. ही इज एंजॉयिंग लाइफ. व्हाट्स हैपनिंग सर? सर, ये आपका अनुमान है, ऐसा है नहीं. वाकई में वहाँ पर दहशत फैली हुई है. हमें खबर मिल चुकी है उनके स्टाफ से, FT टावर में से, कि वो लोग सब बहुत नर्वस हैं और इसी वजह से उनके उल्टे सुल्टे स्टेटमेंट आते हैं. वेंकटचारी, जो कि एक ब्यूरोक्रेट थे, महाराष्ट्र के चीफ एडिशनल सेक्रेटरी थे शरद पवार के रेजिम में, जो शरद पवार के साथ रहे हैं और जो इंस्ट्रूमेंटल थे, MCX के FMC के चेयरमैन थे, उन्हें वो MCX के चेयरमैन बनाए, उसके बाद में FTIL के चेयरमैन बनाए.
नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन, और अब वो जाकर वो स्टेटमेंट देते हैं जैसे कि कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पैनिक स्टेटमेंट्स हैं ये सब। प्रदीप, उसके अलावा और भी जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं सारे right, we come back to you. Pradeep, I really would like to know from you, in terms of the NSEL scam, you have a situation where there were proprietorial concerns which have taken as much as 300 crores and 400 crores. Now, how could such a thing have happened? Pradeep. Sir, as Saraf साहब बोल रहे थे, this is actually a big challenge for the Modi government कि can they really bust this entire जो एक coordinated तरीके से scam हुआ जिसमें politicians involved थे, people in the corridors of power involved थे, and the biggest losers are the investors. But every time investors come, you know the reason every regulator said, "By इस case में investors are not small investors, they are big investors." But coming back to the entire crux of the matter is, how could 24 defaulters up till now? I mean, what I feel personally, the entire scheme जो चल रहा है, investigations and the entire judicial administration of justice वाला process है, बहुत धीमा चल रहा है सर, बहुत धीमा. And as you said, how could proprietary concerns, like there is Yathuri Associates, like you will also agree, it's actually a proprietary concern where 405 crores का घपन करना. Now, इससे proprietary concern इसमें इतना बड़ा default करना, these things cannot be happening without, and rightfully has been arrested. But ultimately, initially when Mr. Jignesh Shah was telling that he is not involved और lower level पे इस चीज का scam हुआ है, but मोदी गवर्नमेंट के सामने मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के तारीख में. लेकिन यहाँ पर सराफ साहब आप बताएं, जो अभी प्रदीप नाम्बियार जी ने कहा, सर एक्चुअली मैं आपसे एक अभी सिंस ही इज देयर ही नीड टू टेल, अभी आज ये इन्वेस्टर एजुकेशन आपने सिटी लिमोजिन जैसे 50 कंपनी के आपने लोगों को फ्रॉड एक्सपोज करके, तो आज के तारीख में यहाँ पर एक एजुकेशन क्लास भी होना चाहिए. ही शुड बी आस्किंग हिम अबाउट T+2, T+25, T+10. No, that's what I'm coming to. I really would like to know from you, सराफ साहब, आप ये बताएं कि as far as the NSEL scam is concerned, what is the scam? What is the status of the scam right now? What is the status of the investors? आखिरकार आपके मुताबिक क्या असल में लोगों को पैसा मिलने वाला है या नहीं? बताएं. सर, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जी. इनका अगर मैं जवाब देने की कोशिश भी करता हूं तो टाइम बहुत लगने वाला है. चलिए पहले आप ये बताइए कि आपका खुद का क्या इन्वॉल्वमेंट है और आप खुद क्या कर रहे हैं इसमें, पहले ये बताएं. जी देखिए, मेरा तो मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट है, मेरे पैसे लगे हुए हैं, वो मेरे पैसे डूबेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत हार्ड अर्न मनी है. मैं आईआईटी का इंजीनियर हूँ, मैंने मेरे खून पसीने से पैसा जमा किया है और वो मेरा पैसा है, मेरे पास वापस आएगा और वो पैसा 100% मिलेगा. मेरा मिलेगा तो सब इन्वेस्टरों को मिलेगा क्योंकि सबको बराबर. ये आपका विश्वास किस उम्मीद पर आधारित है? क्या सिर्फ उम्मीद है? ये जरा बताएं. सर, सही प्रश्न पूछा. इसकी हमारे को उम्मीद है मोदी सरकार. क्या अगर यूपीए सरकार होती, हमने राइट ऑफ कर दिया था 31 मार्च को. मैंने भी काफी कुछ राइट ऑफ कर दिया कि भाई हमको निराश हो गए थे कि अब तो क्या आना जानी है, कुछ आएगा नहीं, तो 31 मार्च को राइट ऑफ कर दो, कम से कम टैक्स भरने में भी कोई फायदा नहीं है. लेकिन जैसे मोदी सरकार आई, बहुमत से आई, आप सर याद करें जब मोदी जी वेस्ट बंगाल में प्रचार करने गए थे इलेक्शन कैंपेन के लिए, तब उन्होंने शारदा स्कैम का जिक्र किया था. शारदा स्कैम का जिक्र किया था. वो हर सबको याद है, आपको भी याद है. तो ये आदमी कोई भी स्कैम पसंद नहीं करता है और इन्होंने इलेक्शन के पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और उस टाइम ने हमने इनको जानकारी दी थी कि सर ऐसे ऐसे स्कैम हुआ है. मैं पर्सनली जाके इनसे मिल के आया था अहमदाबाद में. इनको सारा सब कुछ मालूम है. लेकिन क्या है कि पिछले जो 2 महीनों में जो एक काम हुआ है वो 15 महीनों में नहीं हुआ और उसका कारण एक ही है कि क्या काम हुआ जनाब, ये बता रहा हूं. उसका कारण यही है कि यूपीए सरकार के कुछ मंत्री और कुछ कांग्रेस के दूसरे पार्टियों के गठबंधन के नेता लोग, उनका पूरा हाथ जिग्नेश भाई के सिर के ऊपर था और ये बात बहुत क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है. अगर कोई नहीं देखना चाहता है तो इसका मतलब उसकी इच्छा नहीं है देखने की, हकीकत देखने की. बाकी अगर देखना चाहे तो साफ जाहिर है कि 15 महीने तक जो कुछ नहीं हुआ, जो एफएमसी का चेयरमैन है उसको आप एमसीएक्स का और एफटीआईएल का चेयरमैन बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पूरा एफएमसी का चेयरमैन है मिस्टर खटुआ, उसके लड़के को आपने वहाँ पर सर्विस दे रखी है. गवर्नमेंट जो जोसेफ पॉल है जिसने कि वो एफसीआरए का एग्जेम्पशन दिया था, उसको वहाँ पर आप लीगल एडवाइजर बोल के रख रखे हो. 4 आदमियों को दिल्ली में छोड़ रखा है जस्ट टू बाय इन्फ्लुएंस.
just to influence government policies, तो क्या होगा? हम लोग तो आफ्टर ऑल छोटे मोटे निवेशक हैं, हमारी हस्ती क्या है? हमारी हस्ती कुछ भी नहीं है। ये तो 13,000 इन्वेस्टर्स का बात है, एंड आई डोंट फाइंड एनी नो, अभी FTIL NSEL का मर्जर चैलेंज हुआ इन द कोर्ट्स. नाउ दैट्स अ जुडिशियल लॉन्ग, यू नो एनी जुडिशियल प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. एक है और 22 डिफॉल्टर्स है, उसमें से पैसे कैसे निकाले? FTIL NSEL मर्जर कोर्ट्स के ऑर्डर के बाद अगर कोर्ट्स के ऑर्डर भी आता है, the entire liquidation, Bajaj साहब, you have been handling financial crime since past 25 years की history आप देखोगे, it seems very, as he said, the Modi government seems to be the only silver lining the entire episode, that fast and जिस प्रकार से administration judicial process speeden up करके न्याय मिलने वाली. बट ऐसे लोगों से जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी कंसर्न, यथोरी एसोसिएट 405 करोड़, कोई और 1000 करोड़, 938 करोड़, तो इन लोगों से No, what I can't understand is, Pradeep, this is absolutely fine. What I can't understand is, and here I really would like to see, can we have the graphics on again, please? This is something which really bothers me. It is that when it was discovered that as far as the NSEL scam is concerned, where is the scam? That's what we have you know got to look at. That you find that commodities trade is taking place, you are investing, and you have say T+2 or T+25 or at times even T+35 and stuff like that, and you find that A, there is no money in the exchange, or B, there are no commodities to back up that exchange. Correct. There is no commodity to back up that transaction. Now, Mr. Saraf, you tell us, जहाँ तक आपका सवाल है, आप बताएं कि how could such a thing have gone on for such a long time, Mr. Saraf? सर, ये बहुत मेटिकुलसली प्लान स्कैम है जी. आप एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो कि आई वुड से ही इज अ जीनियस, वर्ल्ड क्लास जीनियस. Mr. Jignesh Shah. मिस्टर जिग्नेश शाह, राइट, ही इज एब्सोल्यूट जीनियस. इनफैक्ट मैंने एक बार इनको ऐसे ही दोस्ती में कहा था जब हम मिला करते थे कि जिग्नेश भाई, अगर आप FTIL में टेक्नोलॉजी का काम करते थे तो वो शायद इन्फोसिस से बड़ी हो जाती थी. ही इज अ जीनियस ऑफ दैट क्वालिटी. बट उनको क्या लालच आ गया और क्या ये आ गया कि MCX और IEX जैसी अच्छी एक्सचेंज बनाने के बाद में ये NSEL जैसी फ्रॉड्यूलेंट एक्सचेंज बनाने की जरूरत कहाँ थी? और ये जो बनाई डे 1 से उनका इरादा फ्रॉड का ही था. नहीं तो अपने मामा मौसा कौन है, मुकेश भाई, उनको ऑडिटर बनाने की क्या जरूरत थी? When Ernst and Young was auditor, yes, where was the need to change that auditor to one of your? No, but how does it work? You are talking about transactions taking place on the same day, right? So in arbitrage, you have the opportunity of earning say 12 to 15% interest. Correct. That was the basic hook, Correct. right? Correct. But later on, it was found that the exchange just didn't have the money, Correct. or the commodities to back it up. Correct. Correct. So how are you so confident that you will get your money back? Because Sir, all that the exchange has to do is to say, hey, we don't have anything. You want to send us to jail? Fine. Sir, What happens? We have given hard money to them, Right? hard cash to them, let us say. Yes. In terms of bank draft or check or whatever. Money is in the system. पैसे That का money कोई is धुआं नहीं still होता है. that money is still there in the system. Is Yes, that what it you're is there saying? in the system. Therefore, system से निकालना है हमें. मैं कहने का मतलब ये हुआ, please, let me understand you. Of all the transactions which have taken place, wherever you have invested money, either for arbitrage or for forward trading or for whatever, or for a hedge, the fact is that as far as, because here, please remember, in the NSEL, you are always betting in pairs. Correct. Am I right? Correct. It's a paid contract. Right. So you will have to trace that money. Sir, That money must have gone somewhere. So you just have to follow the money trail. And finally, it may lead you to places which may be embarrassing even for the Modi government. Please correct me if I'm wrong, sir. Sir, it will not be embarrassing for Modi government. It will probably be embarrassing for the UPA government. Right. That is point number 1. Number 2, money को trace करना, उसका काफी कुछ काम हो चुका है. DOW और ED दोनों ने काफी कुछ काम कर चुके हैं. तो अब ये क्या है कि जहां तक ED का सवाल है, तो उनसे हमारी कई बार मुलाकात हुई. उसमें ED जो है वो PMLA को एग्जीक्यूट करता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को. उस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई चीज ED सीज करता है तो वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को जाती है. Right, Pradeep. Now let's take a look at as far as some of the companies are concerned. I really and truly hope that what Mr. Saraf says is right. जहाँ तक सराफ साहब का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सराफ साहब बोल रहे हैं वो असल में होगा कि पैसा सबको वापस मिलेगा. जैसे सराफ साहब ने अभी बोला, अगर मेरा पैसा मिल जाएगा तो बाकी सबका भी मिल जाएगा. सिंपल बात है.
और यहां पर सिर्फ पैसा ट्रेस करने की बात है और इच्छा शक्ति की बात है। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में इच्छा शक्ति है, क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरी जो जानकारी है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मिस्टर सराफ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रदीप और प्रोफेसर अय्यर, वी हैवंट गॉट प्रोफेसर अय्यर इन yet, we will get him in just a little while. No, on this issue I have a point. Yes, just 1 second. The fact remains that so far I haven't heard of any major BJP player in the NSEL. कोई भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा खिलाड़ी कोई इसमें नहीं है जहां तक मैं जानता हूं। तो हो सकता है कि सराफ साहब की जो उम्मीद है वो असल में उनको पैसे मिल जाए। प्रदीप, but let's talk about some of the companies that were there. Sir, ultimately, as you said, the objective, जैसे सराफ साहब का भी है, इस चैनल का है, आपका है, मेन फोकस है 13,000 और इन्वेस्टर्स को पैसे कैसे वापस करना, चाहे वो 5,400 करोड़ हो, whatever it is. The enforcement agency says they have attached around 4,000 crores of properties. Now, if you look at the people, 22 defaulters जो आज तक भर नहीं पाए पैसे, and the way the lavish, extravagant चीज तरीके से, because we have seen how Lotus Refinery is functioning. Correct. It was totally a fraudulent operation, and he ulta wo he made a movie out of it. he made a movie out of that with Amitabh Bachchan and all the top stars. Satya If you 2. talk about Satya 252 crores, approximately 252 crores, तो just lavish तरीके से इसको spend किया है, ये कैसे वापस मिलेगा? That is what the most important thing. ठीक है, FTIL, NSEL merger is there. Assets, as Saraf साहब was saying, the assets are there. Assets बहुत है, FTIL के पास बहुत assets है. उसको liquidate process होने के बाद, कोर्ट के बाद, they have got legal process, legal remedies available to them. That seems to be slightly long, whatever I say. But ये जो प्रॉपर्टीज अटैच किया हुआ है, जिस प्रकार से 4,000 करोड़ का एनफोर्समेंट एजेंसीज का कहना है कि अटैच किया है, इसको कैसे But Pradeep, the major cases, and just sorry for interrupting you, यहाँ पर सराफ साहब आप जरा बताएं कि we have a case over here of a gentleman who was allowed to borrow 1,000 crores, 1,000 crores from the NSEL without depositing that amount of commodity with the exchange. Correct. The gentleman is the son-in-law of Shankar Lal Guru, Correct. who was at that time a former chairman of the NSEL. Correct. Right? NK Proteins के जो Correct. मालिक हैं। Correct. अब आप मुझे बताइए, what is the status of that case? Because you seem to be knowing everything about this. आप ये बताएं कि वो जनाब कहाँ हैं? NK Proteins का जहाँ तक सवाल है, where is that company? What has happened to it? Where is that 1,000 crores? Sir. That company is doing very well. They are working very well. We are very happy for that because अगर वो कमाएंगे करेंगे तो हमारा पैसा नेचुरली देने की उनकी क्षमता होगी। अगर वो कंपनी उड़ जाती चली जाती तो हमें डर लगता, खेद होता, दुख होता। आज दिन में 2-2:30 बजे उनकी निमेश पटेल की हियरिंग पूरी हुई है। सोमवार के दिन वो उसका जजमेंट आने वाला है। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल की अप्लाई की थी। लेट अस होप, प्रे टू गॉड कि वो एंटीसिपेटरी बेल एक्सेप्ट नहीं होगी एंड ही विल बी बिहाइंड बार्स। नीलेश पटेल वाज ऑलरेडी बिहाइंड बार्स। राइट। और So now Nimesh is also going. जहां तक शंकर लाल गुरु का सवाल है, he has pleaded before EOW about his age and his health and all this. Number 1. Number 2, उनके ऊपर यूपीए सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री का भी आशीर्वाद है, हाथ है। तो उनको अब तक है। अब तक है। लेकिन अब वो नहीं है। अब वो मंत्री नहीं है, लेकिन आशीर्वाद। तो वो मंत्री नहीं है, तो लेट अस सी अब उनका इफेक्ट क्या होता है आगे। But are they returning the money? That's what I'm interested in. Are they returning the money? नहीं सर, देखिए, none of them no, except two defaulters. No, and that too about 6 crores. Yes, and very negligent. Now, what do you do of as you say, NK Proteins? 938 crores. Jaturi 1,000 crores. Yes, 1,000 crores. Jaturi crores. Acid says around 405 crores. Lotus Refineries 252 crores. LOIL Group, that is 720 crores. ARK Imports 720 crores. Mohan Group 878 crores. PD Agro Processors 675 crores. I mean, look at the figures. Look at the figures. Can we believe that such kind of big fraud existed but and no one knew about it? But Mr. Saraf, but Saraf Sahab, I am really and truly amazed at your optimism. I am really and truly amazed, and I feel very happy to see you being so optimistic. By the way, let me tell you this: we interviewed Saraf Sahab way back 15 years ago, when he had just become chairman of the FIEO. That was on another channel, and he does not look a day older. But thank you. but that's a separate issue. But all that we are concerned with over here is that as far as you are concerned, what is the reason for this optimism? Because we are talking about 15,000 investors, 15,000 investor, जिसमें public sector units भी हैं like MMTC and PEC. They are also victims of this fraud.
अब आप मुझे बताइए कि आप उसके बावजूद इतनी ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं। सराफ साहब जरा मतलब सर, दर्शकों के जहन में ये सवाल उठ रहा है बार बार। सर दैट इज आवर स्ट्रेंथ। नंबर अगर आज 5 इन्वेस्टर होते, 50 इन्वेस्टर होते तो शायद पैसा नहीं मिलता जी। बट बिकॉज देर आर 15,000 इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व एंड देर इज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व। जो आप भूल रहे हैं, इट्स नॉट ओनली द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व हियर, वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द वुड बी इन्वेस्टर्स ऑल्सो। कमोडिटी ट्रेड के अंदर 60% गिरावट आई है इन्वेस्टमेंट के अंदर बिकॉज ऑफ NSEL, नथिंग एल्स। उसको वापस लाना है हमें, वो वापस कब आएगी? जब हमारा पैसा मिलेगा। अब दूसरी बात ये है कि EOW ने कुछ एसेट सीज किए हैं, वो तो कह रहे हैं 6,200 करोड़ के हैं, लेना हमें 5600 करोड़ है। चलो 6,200 का नहीं होगा, 2,2500 करोड़ जो भी होगा वो होगा, और बैलेंस FTIL विल हैव टू पे। वो तो FTIL की जिम्मेदारी बनती है। अगर NSEL ने फ्रॉड किया है, coming to you, Professor Iyer, you wanted to say something. I want to support Saraf Saab on this. See, Yes. He mentioned 2 companies, Right. Multi-Commodity Exchange, which has successfully operated, and Indian Energy Exchange. Incidentally, they will be getting 3rd year the award for being best exchange on 27th at my place. And Saraf Saab's optimism is correct regarding the structuring of the company. So what he said rightly, that Modi government needs to find the interest of the 15,000 investors, because if he is trying to draw foreign funds into this country, he must first set this house in order. And therefore, I am very sure that the way Modi Saab has gone in the past, he will definitely ensure in this case that these investors are not duped. And this public sector, public sector involvement is definitely in favor of the group that Saraf Saab represents. Right now, but over here, but the great thing, Pradeep, just one second. I'm coming to you. The sacked CEO of the company, Mr. Anjani Sinha, right? Yes. Okay. Anjani Sinha, in his first affidavit, tried to take the entire blame on himself. Correct. In his first affidavit, he said he tried to exonerate all other promoters. Correct. He said that, listen, I am responsible, nobody else is responsible. However, since then he has retracted that affidavit ever since he was sent to jail, and he realized that he has been hung out to dry. Correct. But the very important part over here is, जहाँ पे सबसे ज़्यादा important बात जो है, अंजनी सिन्हा की धर्मपत्नी शालिनी सिन्हा, she was found to have traded about 40,000 crores on the MCX after Anjani Sinha went to jail. Saraf Saab. Yes, what you are saying is correct. जी. Anjani Sinha was used by Mr. Jignesh Shah जी. as a pawn in a very smart way. उन्होंने कहीं भी I love the way you admire Jignesh Shah. I mean, this is amazing. He's a fan. He's a real fan of He's Jignesh an Shah. absolute genius. Believe me. I have great respect for that man. जी. As a genius, I have great respect for that man. But उन्होंने गलत ढंग से use किया. That's besides the point. जी. But let me tell you about one small thing. Just bear me out for 1 minute. Please go ahead. After Anjani Sinha was arrested, जी. he was taken with the police party of EOW to FT Towers. Right. And FT Towers में उन्हें बताना था कि NSEL का सर्वर ये है और यहाँ पर इनकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस अवेलेबल है। उनके जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, मैनेजर थे, उन्होंने कह दिया EOW को, सॉरी, उनका वो जो सर्वर है वो करप्ट हो गया, डाउन हो गया, एंड दैट हार्ड डिस्क हैज बीन सेंट टू बेंगलोर फॉर रिट्रीविंग. EOW did not even bother to check, to physically verify ki where is that server, where is that hard disk, whether it has gone or not, and what has happened thereafter. Now they are saying, now the FTIL fellow says, who is sitting in EOW, that server was always there. It never got corrupted. Right. अगर ऐसी बातें हैं ये, तो you can add 2 and 2 equal to 4. तो कहीं ना कहीं तो इसमें कोई गड़बड़ है ना. अभी वो इस बात का खुलासा ही नहीं कर रहे हैं, EOW भी जवाब नहीं दे रहे कि भैया सर्वर डाउन हुआ था कि नहीं हुआ था, और डाउन हुआ था तो वो सब डेटा कहाँ गई. वो डेटा तो सारी अवेलेबल है, मौजूद है. दैट वुड थ्रो लाइट ऑन अंजनी सिन्हा एंड इट विल प्रूव व्हाट अंजनी सिन्हा सेड first is right, but where is the 40,000 crores? That 40,000 crores. For that, all that is a wash trade done by the Mr. Jignesh Shah. Right, Pradeep, you were about to say something. Please go ahead. ये जिस प्रकार से organized crime है, if you look at the defaulters list, if you look at Yaturi, it seems to everybody is a family business. So companies खोल के default भी किए, it seems to be family business. If you see Yaturi, as you said, NK Proteins, Nimesh Patel, and Nimish Patel, Nilesh Patel. Yaturi is the same thing. Asta Group, Mohit Agarwal, Shilpa Agarwal. That is the son-in-law. that is the son-in-law of the former chairman of NSEL. Lotus Refineries, Arun Sharma. LOIL Group, Balbir Singh, Janak Raj Singh, and all things. Namdhari Group, you got Daljit Singh. So,
हर चीज आप एक एक कंपनीज को एक एक चीज को डिफॉल्टर्स को देखेंगे. इट वाज अ फैमिली टाइप ऑफ बिजनेस which everybody had formed probably with intention of duping to commit fraud in connivance with NSEL, and NSEL top management totally involved, people in power totally involved. This was a setup to defraud the investors. Right now, Mr. 15,000 investors को पैसे कैसे वापस मिलेगा? ये संघर्ष. We are with Mr. Saraf and we all are. We need to name and shame these defaulters continuously. Now wait a minute. It has to be a campaign. Now, Pradeep, you are absolutely right. But the only thing is, we have still not figured out the entire extent of the fraud. That is still to be figured out. The entire extent of the fraud is still not known to people. Number two, perhaps Mr. Saraf will be able to put a number on it. Number two, I have some very interesting piece of information over here. Please remember, when the NSEL was formed, even before the NSEL commenced business, it was given a specific exemption from Forward Contracts Regulation Act, FCRA, by none other than Mr. Sharad Pawar, who at that time was, apart from being Minister of Agriculture, was also heading the Ministry for Consumer Affairs. The exemption was only for all one-day forward contracts up to 11 days. Correct. And Mr. Paul Joseph, you would remember Mr. Joseph, Pradeep, Mr. Paul Joseph, who signed this exemption later, was known to have joined the FTIL group. The business between 2007-2009 was lackluster, and that is when NSEL, with the full connivance of Jignesh Shah, introduced the paired contract system. Mr. Saraf. सर, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, वेयर इज मिस्टर पॉल जोसेफ. जी. ही इज देयर एज लीगल एडवाइजर टू FTIL. अब ये जो एग्जेम्पशन दिया था, जी, एग्जेम्पशन के साथ में देयर वर 7-8 कंडीशंस. जी. जब भी एग्जेम्पशन दिया जाता है बाय एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी टू सी वेदर द कंडीशंस आर मेट और नॉट मेट. दैट्स राइट. एंड हियर दे वर नॉट मेट. मैं आपको एक बात, एक एग्जांपल देता हूं. आई एम अ मैन्युफैक्चरर. जी. अभी मैन्युफैक्चरिंग में let us say up to certain sale you have exemption from central excise. Yes. If you don't use power, there is exemption. Excise fellows are checking whether you are using power, whether you have crossed that limit of threshold limit of excise exemption. They are checking all that. Where was FMC? Why? What happened? They issued some show cause notice. Quietly it was buried. They sent some letter. Quietly it was buried. Consumer Affairs Ministry was more or less working for Mr. Jignesh Shah rather than for the consumers as it should have. That is what it appears to be. Right. That is what it shows. तो इसमें क्या हुआ? It's a entirely also FMC regulatory body failure. ये कहना उचित नहीं है कि it was unregulated. And I would also like you to throw light, since we really have run out of time, on the role of another gentleman who has just been transferred to another ministry, Mr. Arvind Mayaram. Can you tell us a bit more about that, sir? Sir, less we talk, better it is. No, we would like you to talk, sir, which is why I am asking the question. I know you are still in the business. I know Mr. Mayaram is still heading a ministry, but which was also one of the reasons why Mr. Arun Jaitley transferred him the way he did. Correct. Wherein, notwithstanding the fact that he was apprised of every fact, Mr. Mayaram still did not reveal what was really going on as far as the NSEL is concerned. So, which means Mr. Jignesh Shah not only corrupted just the people around him, but corrupted the entire system right up to the top. Isn't that true, sir? Sir, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ. जी बताएं. Mr. Mayaram called the stakeholders, he called the investors, and he also called Mr. Jignesh Shah and NSEL management. And Mr. Jignesh Shah led the NSEL team. We went inside. Yes. We came out with perspiring, shivering, totally broken down, nervous. Ji. In goes NSEL team. They come out laughing, enjoying, and feeling on top of the world. Now this was long time back. It's right. Maybe in December or something. Yes. तो अभी आप इससे अंदाजा लगा दीजिए. Now what more should I tell you? Right. Day one, he doesn't want. Mr. Mayaram refused to understand the reasoning of the whole thing. यहाँ तक है कि Mr. Jignesh Shah is known to have told one of the investors that भैया क्यों आप इतनी आवाज करते हो? यश राज makes 10 films और उसमें अगर एक फेल भी हो जाती है तो क्या हुआ? मैंने अगर और नो एक्सचेंज बनाई है उनको देखिए ना आप. जी. आप ये जो नो एक्सचेंज बनाई है उनको देखिए. आप ये एक एक्सचेंज मेरी फेल हो गई, इसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? And one final question, sir. As far as the toxic audit is concerned, being conducted at the moment by Grant Thornton, Choksey and Choksey, and PwC. Correct. What is the status of that, sir? उसके बारे में जरा बताइए. Sir, इसमें most important is Choksey and Choksey and PwC.
जी. They were the most important reports, and they have directly brought out all the wash trades and fraudulent dealing. PwC report says 900 crore rupees went out of MCX. जी. Where did it go? Who did it go to? No, they are not able to explain. Out of that, over 200 crores were given as donations to some dubious enterprises, which we now believe were connected with Mr. Mukesh Shah. Mr. Mukesh, the auditor, Mr. Mukesh Shah's address is the same as address of Lafin, a company 100% owned by Mr. Jignesh Shah. Right. I mean, there are just too many corroborative evidences, just too many things happening. So as far as The Mr. entire fraud was a family business. And, Right. And everybody knew that was a fraud except the 15,000 investors who went on putting money with expected little more returns. And the entire thing has collapsed. But I still admire Mr. Saraf's optimism. Mr. Saraf, thank you very much for coming over here. It's been a great pleasure talking to you. I hope you get your money. Mr. Saraf, I really and truly hope you get your money. But as far as we are concerned, we promise our viewers that we will be after this. We are not going to give up. We have started this campaign about NSEL. जहाँ तक NSEL का प्रश्न है, हम लोगों ने ये NSEL के बारे में जो आंदोलन इस वक्त शुरू किया है, ये हम बंद तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सराफ साहब जैसे और अन्य इनके जैसे 15,000 और निवेशक जो हैं उनका पैसा जब तक वापस नहीं आता. I tell you what, it is not just a question of money. It's not just, Mr. Saraf will not miss his money. Let's be very clear. He's a moneyed man. And there are lots of other people also who will not miss that much of their money. But this gives India a bad name. If Mr. Narendra Modi wants, and if all of us wants, why just Mr. Narendra Modi? If all of us want FDI, if all of us want good, clean money to come to the country, then frauds like NSEL just cannot be tolerated. They just cannot be tolerated. As I said over here yesterday, Alan Sanford is serving out a 950-year sentence in the US. Bernie Madoff is serving a 450-year sentence, right? And in China,